हुजूर, अक्सर हम लोग सत्संग में सुनते हैं, आपकी तुकें ये होती हैं कि इस जग में न्यारे रहो और रहो हरि ध्यान, लगे रहो धरी लगे रहो हरि ध्यान, पृथ्वी में देही बसे। और परमेश्वर में प्राण। हुजूर, रोज़ाना की ज़िंदगी में परमेश्वर में ध्यान हर लम्हे में लगाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन लगता है। आप कोई नुस्खा बताएं जिससे हम थोड़े-थोड़े स्टेप्स लेके कम से कम उस तरफ मुड़ तो जाएं। सोच की बात है। ये महात्मा चरणदास की वाणी है कि जग में नारे न्यारे रहो, लगे रहो हरि ध्यान, पृथ्वी पर दे ही रहे परमेश्वर में प्राण। यानी कि जहाँ भी जन्म लिया है कर्मों के कारण लिया है, कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही देना है, उनके साथ जो भी जिम्मेवारियां जुटी हुई हैं उनका भी हिसाब किताब देना है, मगर लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। एथलेटिक्स में जब कोई दौड़ता है उसके सामने उसका लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को लेकर वो दौड़ता है। तो वैसे ही हमें भी कभी अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए कि हम किस लिए जिंदगी में आए हैं, मालिक ने क्या लक्ष्य रखा है। अगर वो ध्यान में रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप हमारे कदम उसी की तरफ बढ़ेंगे। हम भटक जाते हैं, हमारा ध्यान दूसरी तरफ हो जाता है। तो ये रोजमर्रा जिंदगी में हमने ऐसा वातावरण बनाना है। अगर ऐसा वातावरण बनाएंगे, वो जैसे कहते हैं ना कि द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। तो हमने अपनी तरफ से कदम उठाना है, बाकी मालिक की बख्शिश है। थैंक यू। बाबा जी, आपने एक क्वेश्चन आंसर्स में कुछ दिन पहले कहा था, जो किस्मत विच लिखिया है वो जरूर मिलेगा, तो जो नहीं लिखिया वो जितनी मर्जी कोशिश कर लो नहीं मिलेगा। अगर ये सच है तो वेयर इज द एफर्ट एंड द फ्री विल? I think that apart from who am I, this is the next question I think most of us ask, कि how much free will we have. So we have the free will in the sense that we can't choose the circumstances. Circumstances come through your destiny, through your kismat, as per your karmas. But having been put into a certain situation, now it's up to you how to react to that situation. Life is all about making choices. You can as easily make the right choices as you can make the wrong choice. So if you make the right choices, you're finishing the karma. You make the wrong choices, you're setting off another uh, chain reaction. So what is it that separates us? It's animals who react. As human beings, we must have objectivity. We've been given that vivek, that understanding to take the right decision. So from our side, we have to take the right step. Using our vivek, using our discrimination, we must do the right thing. Now, result is not in our hands. If result was in the hands of human beings, there'd be chaos in this creation because everybody wants something different. So the result is not in human beings' hands. Effort is in our hands. And if you put in the right effort and the objective is in front of you and you are working towards the right objective, then with His grace, He will help you to make the right choices and work towards that. थैंक यू बाबा जी। बाबा जी, वन मोर। परमात्मा, ये दुनिया बनाने से पहले सब कुछ परमात्मा के पास था, तो परमात्मा ने हमें पैदा क्यों किया? जिंदगी का मकसद क्या है? मतलब सब कुछ सही था तो दुनिया पैदा करके परमात्मा एक तरह से तमाशा देख रहा है। ये एक पुराना बहुत गाना है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई. So again, this is something we can only understand when we reach his level. The little child is going to ask the parents a lot of questions, but I guess at that level of maturity, he probably won't understand. So what we do understand is that a certain separation is being felt within us as being separated from the Father. And mind you, I use the word felt because the separation is not there. We are part and particle. Atam mein Ram, Ram mein Atam. Chinus Gur Vichara.
that in the soul is the Lord and the Lord is in the soul, but few have been able to understand it. So we are working towards a certain understanding. We are working towards a certain experience where we can feel that divine essence within us. So it's an experience rather than working towards something. We don't have to go anywhere. We don't have to do anything. We just need to experience it within ourselves. So we are not actually separated. We have created that separation because of the physical. When we see ourselves as distinct physical beings, so we feel there is a certain separation. But the moment you see yourself as the soul, that soul is of the divine essence, then you will never see yourself as separated. We are as separated from the Lord as the ray of light is separated from the sun. We are as separated from the ocean as the small drop of water is separated. So that's more in our mindset. We need just to feel that divine essence within ourselves, and that will sort of take care of this question of separation, the question of wanting to go back or achieving something. We are there. When He gave us human birth, we are there. So this life, as somebody said, we come into life uh, thinking that we need to sort of understand what it is to be human. And the moment we learn what it is to be human, the merger will take place automatically.